I hope more and more students will watch this video and share their experience. And if any of your friend is practicing and preparing for the IELTS exam, tell him to watch this video. नए क्यू कार्ड्स का मौसम आने वाला है, या मैं कहूँगा कि आ ही गया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि आइल्स के जो क्यू कार्ड्स एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं, दे चेंज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। करंटली जो चल रहे हैं दे आर फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त, और अभी बहुत जल्दी सितंबर टिल दिसंबर की नई लिस्ट आने वाली है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो अब पता चल गई है दैट September onwards the examiner starts to ask you new cue cards, but it never means कि जो previously वो आपसे क्यू कार्ड पूछ रहे हैं वो नहीं पूछेंगे या वो सारे क्यू कार्ड पूछे जाना बंद हो जाएंगे। At an average 25 to 30 new cue cards get introduced. However, the previously being asked cue cards go out of the list. Now, इनमें से कौन से क्यू कार्ड नहीं आएंगे, कौन से जाएंगे, एक बात मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि पिछले अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 साल से मेरे YouTube पर वीडियोस आ रहे हैं, तो आप नोटिस करिएगा कि कई सारे क्यू कार्ड्स जो मेरे वीडियोस में आज से 2 साल पहले नज़र आ रहे हैं वो सितंबर में दोबारा से आने लगे। दैट मीन्स कुछ क्यू कार्ड्स आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट्स टू अपीयर अगेन। फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट जो एक मूवी वाला क्यू कार्ड चल रहा है वो बहुत पहले पूछा जा रहा था, या टॉल बिल्डिंग की बात करें या एक्टिविटी नियर वाटर की बात करें, ये ऐसे कुछ क्यू कार्ड्स हैं जो काफ़ी टाइम पहले भी पूछे जा चुके हैं। नाउ व्हाट दिस वीडियो इज़ एक्चुअली अबाउट, before I tell you, I want you to hit the subscribe button right now if you haven't subscribed, because now this channel is going to benefit you greatly if you are going to take the IELTS exam in the month of September or any time after. आज के बाद मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को टू शेयर देयर IELTS स्पीकिंग एग्जाम एक्सपीरियंस ऑफ द डे, क्योंकि as per my experience examiner starts to ask new topic pretty much somewhere by the last few dates of August. So अगर अभी हमें स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और बाय एनी चांस अगर किसी स्टूडेंट को न्यू क्यू कार्ड पूछा जाता है या पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी नया टॉपिक पूछा जाता है, we will be going to prepare the videos and upload or update those cue cards and that part 1 introductory questions in Speaking Booster, my electronic book that helps students in their IELTS preparation, और ये उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो आने वाले टाइम में IELTS स्पीकिंग एग्जाम देने जा रहे हैं। सो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 17th of August, that is today, या प्रीवियसली कल जिन्होंने अपना IELTS एग्जाम दिया है। I want you to spare some time for me or for your friends who watch this channel. Hit the comment section, share कीजिए अपना एग्जाम एक्सपीरियंस। एटलीस्ट हमें ये बताइए क्या थे आपके इंट्रोडक्टरी टॉपिक और क्या था क्यू कार्ड, एंड इफ देयर इज एनीथिंग न्यू आई विल instantly help you with the preparation of those new topics without any delay. I hope more and more students will watch this video and share their experience, and if any of your friend is practicing and preparing for the IELTS exam, tell him to watch this video, hit the comment section to get familiar with the importance and the latest question that the examiner are asking. And if I find anything new in the comment section in my next video, I will share with you and share the sample. And tomorrow again, I will come up a video for the students who are going to take their exam tomorrow, that is 18th of August. Thanks for joining, and I hope you will love the series of my new videos. Continue to watch this channel, continue to give me your support, hit the like button if you haven't done it so far. Thanks for watching.